Good morning and again welcome to our economics class. In this class, we study about the consumer equilibrium. In the last two sessions, we study consumer equilibrium in a single commodity model and consumer equilibrium in two commodity model. It means how a consumer get maximum satisfaction when he purchase one commodity or when he purchase many commodities. In the case of many commodities, we assume that he consume only two commodities. In today's class, we study again consumer equilibrium, but now with the help of ordinal approach. It means with the help of indifference curve analysis. But first, what is the ordinal approach? हमने जो पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, चाहे वो सिंगल कमोडिटी में या टू कमोडिटी के अंदर, हमने वो पढ़ा है द यूटिलिटी एनालिसिस, जो हमारे लिए कहलाता है कार्डिनल अप्रोच. In cardinal approach mainly given by Marshall and Pigou. In cardinal approach we study the measurement of utility in terms of money or in the numericals number. But the ordinal approach criticizes the cardinal measurement of utility, and in ordinal approach we can measure the utility not in numerical numbers but by giving preference or rank. Suppose that any person consume different commodities, so he can give the rank to the different commodities, not express his utility or satisfaction in the numerical numbers. Suppose that a consumer purchased three commodities. He purchased a bike, he purchased mobile, and he purchased a pen. So he give first rank to the bike, second rank to the mobile, and third rank to the pen in the normal conditions. So what is the utility ordinal approach? First, second, third. First rank to the bike, second rank to the mobile, and third rank to the pen. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यूटिलिटी है हम उसको सिर्फ रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं. हम ये नहीं बता रहे कि नंबर्स में हमारे को कितनी यूटिलिटी मिली. हम सिर्फ इतना शो कर रहे हैं कि अगर तीन कमोडिटी कंज्यूमर ने परचेज करी तो उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी किससे मिली? बाइक से, उससे कम मोबाइल से, और उससे कम उसको पेन से मिली. पर कितना मिला इसका मेजरमेंट नहीं कर. तो ऑर्डिनल अप्रोच जो हमारे को दिया गया मेनली वो जो मॉडल इकोनॉमिस्ट है हमारे एलन और हिक्स ने दिया इन 1934. According to Allen or Hicks, we can give the rank or preference to the utility. We can't measure them in the numerical numbers. So now we study ordinal approach, consumer equilibrium with ordinal approach. But first we study indifference curve. What is the meaning of indifference curve? If we see it very carefully, indifference curve, it means it's a curve in which there is no difference. So what is indifference curve? An indifference curve shows the various combinations of two commodities which give the same level of satisfaction to the consumer, and a consumer is neutral or indifferent for selecting any one combination among them. तो indifference curve क्या बता रहा है? An indifference curve shows the various combination of two commodities which give the same level of satisfaction to the consumer, and the consumer is neutral or indifferent for selecting any one combination among them. It is the indifference curve. तो मैं सिंपली हिंदी में बात करें, indifference curve क्या हो गया? दो commodity के सारे combination हमारे को शो करता है कि जहां पर कंज्यूमर को समान इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है और कंज्यूमर उसमें से पर्टिकुलर किसी भी सेटिस्फेक्शन पॉइंट को लेने की कंडीशन में नहीं होता कि उसके लिए सारे सेटिस्फेक्शन पॉइंट सारे कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके, नाउ इज indifference schedule. It's the schedule of two commodities which give the same level of satisfaction to the consumer, and consumer is indifferent or neutral for selecting any one combination among them. दोनों एक ही चीज है. indifference कर्व में इसको हम कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं just like this, और indifference schedule के अंदर हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? by the schedule. Now we see with the help of book. Indifference curve. Indifference curve refer to the graphical representation of various alternative combination of bundle of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer. In other words, indifference curve is a locus of point that shows such combination of two commodities
which give the consumer to same satisfaction. So indifference curve shows the various combination of two commodities which give the same level of satisfaction to the consumer. So the consumer is indifferent or neutral for selecting any one combination among them. Just like other concept, the concept of indifference curve is also based on some assumptions. जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपने देखा इसके कुछ assumptions हैं. आपने पढ़ा कंज्यूमर इक्विवेलेंट सिंगल कमोडिटी मॉडल, उसके भी कुछ assumption हैं. सिमिलर वे के अंदर यहाँ भी हम कुछ assumptions हिंदी के अंदर बोलते हैं मान्यता लेके चलते हैं कि जिसके बिहाफ पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट, द कंज्यूमर इज रेशनल एंड ही वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गिवन मनी इनकम. कंज्यूमर रेशनल है, विवेकशील है, और वो क्या चाहता है कि अपनी लिमिटेड इनकम से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो. सो कंज्यूमर वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड मनी इनकम एंड इज रेशनल, विवेकशील समझदार है. दूसरा, कंज्यूमर कैन रेंट हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच बंडल ऑफ गुड्स. अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, जितने गुड्स को परचेज कर रहा है उसको वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग रेंट प्रोवाइड करेगा, न कि उसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट करेगा. Prices of goods and consumers income is given and remain constant. Goods की prices और consumer income दिया हुआ है और कैसा रहता है वो constant, उसमें कुछ भी changes नहीं होगा. Consumer की income भी given है और goods की prices भी given है. There is no change, taste, nature, habit, preference of the consumer. Consumer के taste, nature, habit, preference किसी में कोई चेंजेस नहीं होता. All these are remain constant. There is consistency of consumer behavior. और जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी कैसा है, कंसिस्टेंट. मान लीजिए इसका मीनिंग क्या है कि कंज्यूमर के बाद तीन कॉम्बिनेशन ए बी सी, अगर उसको ए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे कम बी से, उससे कम सी से, तो समझने वाली बात है कि नहीं, ए का जो सेटिस्फेक्शन है वो सी से ज्यादा ही रहेगा. तो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो कंसिस्टेंट है. एक बार जिस कॉम्बिनेशन को लाइक कर रहा है तो उसके अंदर वो चेंजेस नहीं करेगा. सो ऑल दीज आर द assumptions on which the indifference curve analysis is based. Now we see with the help of a schedule and the diagram. In the schedule we take 5 combinations A, B, C, D which give the consumption of two commodities X and Y. At A combination, consumer consume 1 unit of X commodity and 12 units of Y commodity. On B, he consume 2 units of X commodity and 8 units of Y commodity. On C, he consume 3 units of X commodity and 5 units of Y commodity. And D, he consume 4 units of X commodity and 3 units of Y commodity. And A combination, he consume 5 units of X commodity and 2 units of Y commodity. If we see that carefully, as consumer increase the consumption of X commodity, he reduce the consumption of Y commodity. तो जैसे कंज्यूमर X का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो Y का कंजम्पशन वो रिड्यूस कर रहा है, जिससे कि कंज्यूमर का जो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा. एंड ही रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉइंट्स A, B, C, D, E. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर्स के लिए उसको क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन लेता है या बी लेता है, सी लेता है, डी या ई सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन को वो सेलेक्ट करता है तो सबको उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. जिससे वो एक्स को बढ़ा रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, वो वाई को कम कर रहा है. सो इस टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल रिमेन सेम. अब वो जो कम कर रहा है उसकी कम करने की रेट आप देखेंगे तो रिड्यूस हो रही है. it reduce 4 units, then 3 units, then 2 units and then 1 units. 12 to 8 इसमें कितना कम करा, 4. उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1. Why he reduced the consumption of Y commodity at the reducing rate? We see it when we study that why the indifference curve is convex to the origin. But जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसके हम डिटेल में बात करेंगे. Okay. So A, B, C, D, E give same level of satisfaction to the consumer. Now we see it with the help of diagram. In the diagram on x-axis we take the X commodity and the y-axis we take the Y commodity. We take 5 units of X commodity.
So you have to take the scale, same scale, and taking the 5 points, and their difference remains same. जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, 2-2 सेंटीमीटर पर 5 पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4 5. अब y के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है 12 यूनिट्स, तो y के लिए आपने क्या करा, 2-2 पर आपने 2 लाइन पर 2-2 पॉइंट्स लेते हुए 12 लाइन पर 12 पॉइंट आपने शो करे. So by this way take the scale of x and y only. अब हमारे को 5 कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करने हैं, कौन कौन से, a b c d. a पर कितना ले रहा है, 1 यूनिट ऑफ x and 12 यूनिट्स ऑफ y. a 1 यूनिट ऑफ x and 12 यूनिट्स ऑफ y. b combination 2 and 8, 2 units of x, 8 units of y. c combination 3 and 5, 3 units of x and 5 units of y. d combination 4 and 3, 4 units of x, 3 units of y. e combination 5 and 2, 5 units of x and 2 units of y. So consumer take these 5 combination a b c d e. If you match all these with a smooth line, we got the indifference curve. हमने क्या करा, a b c d e जो पॉइंट से इनको आपस में स्मूथली मैच कर दिया, मिला दिया, और उसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड करा है e और a पॉइंट पर. So by this way we got the indifference curve. अब यहाँ पर आप इंडिफरेंस कर्व देखेंगे तो इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर आपको नजर आएंगे. फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कैसा हो रहा है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट. दूसरा, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. अगर हम ओ ओरिजिन पॉइंट से देखते हैं तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है हमारे लिए, कॉन्वेक्स से. तीसरा, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स और वाई एक्सिस. ना तो ये एक्स को टच कर रहा है और ना ही ये वाई को टच कर रहा है. So it is the indifference curve. So in today's class we study what is the meaning of ordinal approach, then what is meaning of indifference curve, who give the concept of indifference curve, what is its meaning. Then we also study indifference schedule. We also study what are the different assumptions on which the indifference curve analysis is based. And then we see explanation of indifference curve with the help of schedule and with the help of diagram. In the next class we study indifference family or different features of indifference curve. Thank you.